So in last classes, what we have learned? We have learned the how we can use the theory of perturbation and how we can calculate the first order correction, second order correction in energy, as well as first order correction in wave function. So today we will just try to use this concept on a harmonic oscillator. So let's go for some problem. So first problem is all about what we have. Our potential Vx is given half m omega square x square. So if it is our potential, then what we have to do? We have to just go for a perturbation, and that perturbation is Hp, that is lambda into x. So this is our perturbation. So, and obviously x is from minus infinity to plus infinity. And then what we have to do? We have to calculate En1 and we have to calculate psi n1. That means first order correction in energy as well as first order correction in wave function. And if we will able to calculate psi n1, we can easily calculate what will be En2, because formulation is such that once you know this thing, you can easily write this particular value. So how you will approach this type of problem? So obviously we have to go for what? Operator method. So if this is my potential, then my eigenfunction is very famous. Nket is my eigenfunction, that is nth state eigenfunction. I can write my phi n is nothing but number vector, that is nket. And I can write my x operator as x naught a plus a dagger, and where x naught is identified as, where x naught is equal to root under h cut upon 2m omega. So we have learned all this story during our discussion in harmonic oscillator. So I deliberately write as x naught because every time you have to write this thing and it will take a lot of time. So let's try to go for our first finding En1. So when we are going to find En1, then obviously that value is equal to nket wn. And here I can assume w is x. So this value is equal to n, and x naught I can take common, that is a plus a dagger and n. So now you can see that a will operate on n, that will be n minus 1. A dagger will operate on n, that will be n plus 1. So formally this value is equal to what? 0. So ये value क्या हो जाएगा? 0. Yes? Everyone is comfortable? और वैसे भी आपको पता है कि average value of x in a harmonic oscillator for this particular potential is equal to what? 0. आगे बढ़े? Now let's try to go for psi n1. So when you are going to calculate psi n1, then you have to go for a formula, that is phi m w phi n, and here we have En0 minus Em0, and you have to go for phi m. And what is your En? En is the energy eigenvalue for original Hamiltonian. The original Hamiltonian is nothing but harmonic oscillator. So that value is equal to En0 is equal to n plus half h cut omega. N plus half h cut omega. So this is your energy eigenvalue. So now let's try to go for this particular thing. Now here you have to go for n is not equal to m. So if I am talking about n is equal to 0,
then m cannot be 0. That should be 1, 2, 3, 4, and so on. So everybody is comfortable here? ठीक है ना? Yes? Okay. So let's go for next problem, next step. So next step में हम लोग जाएंगे. So let's try to go for this. So what is your psi n1? Here you have to write m is equal to not n, and we have to go for m kit x n by e n0 minus e m0, and here we will go for m kit. And this can be again written as summation over m is equal to not n, m, and this x can be written as a plus a dagger. We can take x naught outside from this, and here is n. And here we will go for en0 minus em0 and m kit. En0 and minus em0 n kit. Okay. Just a minute. Okay. So when you are going to calculate this particular series, this is very interesting. This is very interesting. When you are going to calculate this particular series, then what is going to happen? So we can write this thing as x naught summation over m is equal to not n. Here m a n upon en0 minus em0, and here is phi m plus the another will be a dagger part, and x naught will be common to both one. So we have summation over m is not equal to n, m a dagger n, and we have basically en0 minus em0 phi m. So when this thing will going to happen, then a will operate on n. What you will get? तो देखो इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो समेशन आपको सबसे लास्ट में देखना है कि क्या होगा. फर्स्ट यू हैव टू डू द रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर कैलकुलेशन करो, एंड देन यू विल गो फॉर व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट. So let's try to go for this. And here m is not equal to n, and when a will operate on n, what you will get? बताओ क्या होगा? Root n n minus 1. n minus 1. Very good. Root n minus 1, and here you have this series will still there. Plus, now a dagger will operate on n. What you will get? Root n plus 1, n plus 1. Very good. So that will be root n plus 1 m, and that will be n plus 1, and e n0 minus em0 phi m. Clear है ये? Okay. Now, अब आप जब इस सीरीज को देखोगे तो m की वैल्यू क्या क्या होगी? m की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन हर एक m के लिए ये क्या होगा? सर्वाइव करेगा या 0 हो जाएगा? That will be 0, because ये जो वैल्यू है, this value is nothing but delta m n minus 1. And when you are going for this value is also delta m n plus 1. So what will happen? This value will not survive, rather it will go to 0, and this value will also not survive, it is go to 0, except in one condition. Here if m is equal to n minus 1, then it is going to survive, and here when m is equal to n plus 1, then it is going to survive. Clear है ना?
So what is going to happen? Then this value is equal to x naught, and for m is equal to n minus 1, then only this will survive, otherwise all term is 0. So we have root n, and this value is equal to en minus en minus 1. And here you will have kit n minus 1 kit plus summation over m is now, and this term will be root n plus 1, and you have en 0 minus en plus 1 0, and the kit is n plus 1. So this is your final thing. Now we have to put value of en 0 and en minus 0. So ये value क्या होगा? That is difference between two consecutive level. So what will be difference between two consecutive level in a harmonic oscillator? I can use this space. बताइए क्या होगा? H cross omega. H cut omega. So you have en1, sorry, that value is psi n1. You can go for root under, here is H cut omega n minus 1 kit. And what will be happen to this one? En minus en plus 1. What will be this one? Minus H. Minus H cut omega. So this sign will be here, minus root n upon H cut omega n plus 1 kit. And this is n plus 1. And obviously psi n1 x naught. Okay. So this will be your answer. Clear है? Now एक बार आप इसे कैलकुलेट कर लिए हो तो आप बेसिकली en2 भी कैलकुलेट कर सकते हो. What will happen to en2? en2 is equal to phi n w, sorry, so that value is equal to summation over m is not equal to n, m w n, और इसका क्या लेना है? mod square, and this value is equal to en0 minus em0. So this is your en2. So this value is nothing but the matrix element, and you have calculated this one and this one. So इसको हम separately देख सकते हैं. So कोई बता सकता है आंसर क्या होगा? x naught square, because you have to take mod square, so this will there, and you have mod square n upon h cut omega minus n plus 1 upon h cut omega. So this will be your answer. और इसे आप देखोगे, so this is your x naught square by h cut omega minus 1. Okay. And what is this x naught square? So this value is minus h cut upon 2m omega, है ना? So h cut upon 2m omega h cut omega. This value is minus 1 upon 2m omega square. ठीक है ना? Everyone? Sir, So this is- no ठीक है. कुछ गड़बड़ है? No sir, ठीक है. ठीक है ना? इसे स्क्वायर करोगे ना, ये मैट्रिक्स एलिमेंट को जस्ट स्क्वायर करना है, दैट्स इट. इस मैट्रिक्स एलिमेंट को स्क्वायर करना है. ठीक है. और x नॉट की वैल्यू रूट अंडर h कट ओमेगा हमने डाल दिया. सो यू विल गेटिंग दिस थिंग. सो आपको याद होगा एक प्रॉब्लम हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर में किया था, जिसमें कि हम लोगों ने हैमिल्टोनियन लिखा था, दैट इज योर px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस QEX किया था ना, जिसमें कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऊपर लगाया था. तो दिस थिंग यू कैन पुट लैम्डा, और आप अगर जाकर के अपनी कॉपी को रिवाइज करोगे, देन यू विल फाइंड दिस विल बी एग्जैक्ट वैल्यू यू आर गेटिंग, एंड विद अ लैम्डा स्क्वायर, और साथ में आपका लैम्डा स्क्वायर भी आ जाएगा अगर आप इसको लेकर के आओगे तो. सो यू विल जस्ट गो एंड रिवाइज
कि देखो एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। सो सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन करने के बाद आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जा रही है इस प्रॉब्लम में। आप समझ रहे हो मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं? When we are going for the second order energy level, then you will get what? Exact value. Okay? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ठीक है? Yes, sir. ओके। एंड आप देख रहे हो कि सारा पुराना जो कैलकुलेशन है उसे हम इजिली रिवाइज कर पा रहे हैं। ओके, चलो लेट्स गो फॉर perturbation HP is equal to lambda x square. This is also very interesting. So first we have to do En1 and we have to just go for psi n1. Okay, so and this is for the harmonic oscillator. My potential is all about half m omega square x square. So this is our harmonic oscillator, and we have to just go for calculating the first order correction in energy and first order correction in wave function, and then you can easily calculate En2 also, that is second order correction in energy. So yes, what is your En1? Is nothing but phi n w phi n. But here we know we can go for the operator method. So when we will go for operator method, that is n and x square n. And what is your x square? This is nothing but x naught, and x square is equal to a square plus a dagger square plus 2n plus 1 n kit. याद है? Yes, ये होता है ना एक्स स्क्वायर की वैल्यू। yes, sir. ओके, सो ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप परटर्बेशन फास्ट कर पाओगे, अदरवाइज इट विल क्रिएट हैवॉक। सो नाउ द फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट? 0. 0. सेकंड टर्म विल बी व्हाट? 0. ओनली यू विल रिमेन थर्ड टर्म, एंड दैट थर्ड टर्म इज इक्वल टू नथिंग। क्या होगा थर्ड टर्म? 2n plus 1. 2n plus 1. एंड x नॉट की वैल्यू आपको पता है, x naught is equal to root under h cut upon 2m omega. So this is your x naught. Okay, let's go for psi n1. It's a very interesting. Now, so you have again m is equal to naught n, and here we will go for phi m w phi n and e n0 minus em0, and we have to go for phi m. Okay, or get m. Now here we have three terms. So first term will be m is equal to naught n, and here we have to go for x square. So this will be m x square n, and we have to go for en0 em0 and phi m. And now when we will go for x square, then this term is equal to summation over m is not equal to n. The first term is m a square n en0 minus em0 m kit. What will be your second term? A dagger square. So m is equal to naught n m a dagger square n, and you have en0 minus em0 m kit. And what about your third term? So there will be third term also. Okay, so I am you 0. writing this third term here. Okay, third term यहाँ लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा ये? Summation over m is not equal to n, m 2n plus 1 n upon
En0 minus Em0 mket. Okay, so this is the basic story. अब आप देखो इसमें से ये टर्म सरवाइव करेगा क्या? जीरो हो जाएगा. क्यों जीरो होगा? बिकॉज n के ऊपर ऑपरेट करेगा तो n ही देगा, एंड दिस टर्म विल बी समथिंग लाइक, अगर इस टर्म को आप देखोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा? दिस टर्म इज इक्वल टू 2n+1 डेल्टा mn. और अगर ये टर्म डेल्टा mn और आप यहां पहले से करो m इज नॉट इक्वल टू n, तो दैट मीन्स दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0. तो ये टर्म क्या हो जाएगा? ये टर्म 100% 0 हो जाएगा. Okay, now only these two term is going to survive. So this term is here. Okay, so only these two term is going to survive. और उसमें से भी सारे टर्म सर्वाइव नहीं करेंगे, कुछ ही टर्म सर्वाइव करेगा. So let's try to see how we can get whose term is going to survive. Okay. Okay, so when we will go for this one, then you have summation over m is equal to not n. A square will operate on this. What you will get? दो बार ऑपरेट करोगे, क्या मिलेगा आपको? रूट n root n-1, and here is m, and this is n-2, and this value is equal to en0 minus em0. Yes, en0 minus em0 plus second term m is not equal to n. यहां बताओ क्या होगा? a tiger square. So first you will get what? Root n+1. Again you will get n+2, and you have m n+2, and here is mket also, because we are writing the wave function basically. So that value is psi n1. And when you will go for this value is equal to E n0 E m0 mket. Okay. Now, अब ये बताओ ये किसके लिए सरवाइव करेगा या हमेशा 0 हो जाएगा? किसके लिए सरवाइव करेगा? m की किस वैल्यू के लिए? n-2. Very good. So that value is equal to summation over m is not equal to n root n-1, and this will survive for en0 minus en-2, and here is n-2 will remain there. So अब आपका समेशन हम खत्म कर सकते हैं, है ना? नेक्स्ट, ये टर्म किसके लिए सरवाइव करेगा? n+2 के लिए, है ना? So that value is equal to root n+1 root n+2, and this value is equal to en0 minus en+2. और ऑब्वियसली x0 तो आपका बाहर रहेगा ही रहेगा. एवरीवेयर यू हैव योर x0 डायमेंशन तो होगा ही होगा. ओके, x0 इज देयर. नाउ अब आप जब इसे देखोगे, व्हाट विल बी नेक्स्ट? ये बताओ ये वैल्यू कितनी होगी? अब ये दो कॉन्जुगेटिव लेवल की बीच की आपकी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस, and this value is n+2. 2h crossing. Very good. So that value is n+2. So when you are going for this particular thing, so you have x0 root under n n-1, and this value is 2h cat omega n-2 plus root n+1 root n+2, and this value is equal to what? -2h cat omega, है ना?
minus 2 h cut omega, and that value is n plus 2. So you can see this will survive there. Okay, सही है ये? So इस तरह से आप प्रॉब्लम को देख सकते हो. These are basic problem, very simple problem, but yes, calculation is very nice and very logical. Let's try to go for next problem. Next problem में देखते हैं क्या करना है. Okay, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Okay. So a harmonic oscillator Vx is given by half m omega square x square. So this is your harmonic oscillator, and obviously x is between minus infinity to plus infinity. And what is your perturbation? Your perturbation is given by, first perturbation is given by HP is equal to G sine kx. This is your first perturbation. Obviously, x is from minus infinity to plus infinity. And what about second perturbation? Is equal to HP is equal to G cos kx, where k is greater than 1. Sorry, k is greater than 0. K is greater than 0. So this is your first perturbation. These are perturbation. And what you have to do, you have to calculate the E01. That means correction into ground state for first order as for this perturbation as well as for this perturbation. So ground state के लिए हमें यहाँ पर perturbation करना है. Now you can see this is so यहाँ पर आप क्या ऑपरेटर मेथड से काम करोगे क्या, या फिर फंक्शनल मेथड पर लेकर आओगे चीजों को? बेसिकली फंक्शनल मेथड पर लेके आएंगे, है ना. बेसिकली E0 is nothing pi m w pi 0 w pi 0, यही कैलकुलेट करना है. और ये देखो फंक्शन है, यहाँ पर ऑपरेटर को आप डायरेक्टली नहीं ऑपरेट कर सकते हो, है ना. देन ऑब्वियसली इसको डायरेक्टली ऑपरेटर के टर्म में लिखेंगे, then obviously you have to go for Taylor expansion and all this thing. So that will be unnecessary, very much complicated. यहाँ पर x को लिखना होगा x नॉट a plus a dagger, and then you can go for Taylor expansion and फिर उसको इसके ऊपर ऑपरेट करोगे. So much better है कि आप इसको किस में चले जाओ, बेसिकली फंक्शनल फॉर्म में, बिकॉज ग्राउंड स्टेट के लिए बात की जा रही है. तो अगर nth स्टेट के लिए होता देन ऑब्वियसली दैट मे बी ऑल्सो पॉसिबल. ओके, so ground state के लिए बात की जा रही है. That means we have to go for minus infinity to plus infinity, and that value I can take G outside. We have sine kx e to the power minus, so your normalized value is m omega upon pi h cut to the power 1 by 2, because psi star psi, and e to the power minus m omega x square upon h cut dx. What will this value? कैसे कैलकुलेट करोगे इसे? सर ये 5 स्टार फॉर्म होएगा ना? बताओ, कुछ गड़बड़ किया हूं क्या? डोंट वरी, 5 के नीचे 2 होगा, यहाँ 1/4 होता है. यस सर, यस. ठीक है, ओके. मैंने एक साथ लिख दिया है ना. ओके, चलो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी बिना कैलकुलेट किए हुए? बताओ. 0. क्यों? ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन है. दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन. बिल्कुल. so why this value is equal to straight forward 0. Now
अब अगर इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको अभी थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूं, अगर मैं अगर मैं इसे ओपन करूं e⁻ i k x माइनस e⁻ माइनस i k x, ऐसा ही करेंगे ना कैलकुलेट करने के लिए, Yes, sir. है ना? सो जीरो होने का मतलब है कि फर्स्ट इंटीग्रेशन और सेकंड इंटीग्रेशन दोनों की वैल्यू सेम होगी तभी ये जीरो होगा। भाई जीरो तभी होगा ना जब e⁻ i k x और m ओमेगा अपॉन पाई एच कैट टू द पावर 1/2 e⁻ m ओमेगा x स्क्वायर h कैट dx माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी is equal to e⁻ minus i k x, and that value is equal to m omega upon pi h cat to the power 1/2 e⁻ m omega x square h cat dx। ये होगा तभी ये जीरो हो सकता है, अदरवाइज तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, इजंट इट, है ना? Yes. ये वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है? चलो हमने ऑड से कर दिया जीरो, बट ये जीरो होने का मतलब क्या है? दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन, then only it is zero. So this is your homework. Just आप इसे चेक कर सकते हो। ओके, so this is your particularly thing जिसे आप इजिली चेक कर सकते हो। Now let's try to go for second problem and which is very very interesting। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, जो कि आपके एग्जाम में भी आ चुका है एक्चुअली। सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर दिस वन। और आप देखोगे कि मैं बिना इंटीग्रेट किए हुए प्रॉपर्टी का यूज करके इसके सॉल्यूशन को लेकर आने की कोशिश करूंगा। HP is equal to G cos kx. HP is equal to G cos kx. This is your basically Hamiltonian. So how we will go for this? We have to go for minus infinity to plus infinity. I can take G outside. We have to calculate E01, and that value is equal to that value is equal to cos kx m omega upon pi h cut to the power 1/2 e⁻ minus m omega x square upon h cut dx। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली इसको लिख रहे हैं पाई 0 स्टार w pi 0 dx minus infinity to plus infinity. So we are writing this particular thing. Now look at here. मैं और ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? Even function. इवन फंक्शन है। सो हमें इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी नॉट जीरो। अगर ऑड रहता तो आप डायरेक्टली जीरो कर सकते थे। सो नाउ कैन आई राइट दिस होल थिंग एट g upon 2 integration minus infinity to plus infinity e⁻, or you can write m omega pi h cat to the power 1/2 e⁻, or e⁻ minus m omega x square upon h cat e⁻ i kx dx plus minus infinity to plus infinity m omega upon pi h cat to the power 1/2 e⁻ minus m omega x square upon h cat e⁻ minus kx dx। लिख सकते हैं ना? एंड
हमें ये पता होगा कि जो वैल्यू इस इंटीग्रेशन की होगी वही वैल्यू इस इंटीग्रेशन की भी होगी। यस, आप चाहो तो इसे Yes. ट्राई भी कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दिस इंटीग्रेशन, फिर उसे भी कर लेंगे, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटीग्रेट नहीं करना है आपको, चीजों को ब्यूटिफाई करना है। व्हाट इज दिस वैल्यू? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी m ओमेगा पाई एच कैट टू द पावर 1/2। व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। आप इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हो, आपके पास दूसरे टूल्स भी होंगे, आलोक सर ने निश्चित रूप से डिस्कस किया होगा, बट मैं जस्ट इसमें क्वांटम मैकेनिक्स को इंक्लूड कर रहा हूं। ओके, व्हाट आई कैन डू, मैं जस्ट ये इंटीग्रेशन करूंगा फिर उसे डायरेक्ट लिख दूंगा, माइनस m ओमेगा एच कट, और मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं। देन आई हैव एक्स स्क्वायर माइनस m ओमेगा, sorry, that is minus h cut upon m omega I k x। और यहां देखो, दिस इज योर थिंग, I k x, ये पहले से ही है। एंड नाउ आई कैन मल्टीप्लाई विथ 2 एंड डिवाइड विथ 2। I multiply with 2 and divide with 2. Why? Because a square minus 2ab। तो यहां पर आप अगर b स्क्वायर वाली टर्म को लेकर आओ, सो व्हाट इज योर b हियर, बताओ क्या होगा? ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, बताओ क्या होगा b? एच कट आई के अपॉन 2m ओमेगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और ये हमने अपने तरफ से ऐड किया है, तो इसे हम क्या करेंगे, अपने तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एच कट आई के अपॉन 2m ओमेगा होल स्क्वायर dx। मैं जस्ट फर्स्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, सेकंड को हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, दिस इज योर I1। नाउ अब अगर आप इस इंटीग्रेशन को लिख रहे हो, देन व्हाट यू विल गेट, g अपॉन 2 माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी m ओमेगा पाई एच कैट टू द पावर 1/2 e टू द पावर माइनस m ओमेगा एच कैट x minus I k, and h cut is also there, I k h cut upon 2m omega so this will be this whole square into this term, so this will be minus minus plus, and I is square is equal to minus, so this value is e to the power minus h cut will cancel, so you have minus k square, so this term will be there, so one h cut will cancel, so k square h cut upon 4m omega dx। ओके, क्लियर है ना? एग्रीड और नॉट? सो ये वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर लेकर जा सकते हैं। सो व्हेन वी आर, सो मैं ऊपर वाला टर्म को हटा रहा हूं। ओके, सो व्हेन यू आर डूइंग दिस कैलकुलेशन, देन व्हाट यू विल गेट, you will get something g upon 2, और आप इंटीग्रेशन से इसे बाहर ले रहे हो, e to the power minus k square h cut upon 4m omega। okay, and here is integration, that is minus infinity to plus infinity m omega upon pi h cut to the power 1/2 e to the power minus m omega upon h cut x minus I k h cut upon 2m omega
whole square dx. Now can anybody tell me what is this integration without doing anything? क्या होगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू? बताओ सॉटन, क्या होगा? हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है. व्हाट विल बी हैपन टू दिस इंटीग्रेशन? गॉसियन फंक्शन है. What will happen to this integration? So this value is 1, isn't it? ये वैल्यू क्या होगा? 1. क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गॉसियन वेव फंक्शन के पैरामीटर्स को एग्जैक्टली सेम रखते हो, normalization constant is same, this parameter is same, and you are shifting it towards right or left, the area under the curve will be always what? Remain same. और यहां से हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, and this value is equal to 1. Now what will happen to this integration? इस इंटीग्रेशन में क्या होगा? डायरेक्टली यहां पर लिखकर बता सकते हो क्या होगा? प्लस आ जाएगा. वेरी गुड. So the second integration will be, so I am writing it second integration. तो second integration ये है. यहां पर आप जब इसे देख कर क्या आओगे, then what you will use? You will use a something e to the power minus k square h cut upon 4m omega. That will be remain same, है ना? क्योंकि यही टर्म तो बाहर करोगे नेक्स्ट वाले में भी, है ना? ओनली ये टर्म प्लस और माइनस है, ये तो आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो. तो ये अगर प्लस भी हो जाएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. यू हैव टू गो फॉर दिस टर्म. लेकिन अंदर के टर्म क्या हो जाएंगे? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी m ओमेगा पाई h कट टू द पावर 1/2 e to the power minus m omega h cut x plus I k h cut upon 2m omega whole square, that is exponential. So this is exponential minus m omega h cut, that is x plus I k h cut by 2m omega x square dx. And this is your second integration. इन दोनों को आप ऐड करोगे, then what you will get? You will get g by 2. The first integration is e minus k square h cut upon 4m omega plus e to the power minus k square h cut upon 4m omega, and this value is equal to g time e to the power minus k square h cut upon 4m omega. वंडरफुल प्रॉब्लम. सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, सारा खेल इसी पर. अगर आपने थोड़ी भी गलती की तो आपका आंसर दूसरे प्रॉब्लम से मैच करेगा. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. सो लेट्स गो फॉर लास्ट वन. यहां तक क्लियर है ना? ओके. So what we have our potential Vx is equal to half k x square. और अब आप क्या कर रहे हो? आपने k को चेंज कर दिया k डैश से, एंड दिस k डैश इज इक्वल टू बेसिकली 1 प्लस एप्सिलॉन k. आपने k डैश को चेंज कर दिया 1 प्लस एप्सिलॉन k के साथ. सो यू हैव टू राइट योर एनर्जी up to first order of epsilon. Okay, so what will be your energy from this point of view? अगर k डैश है तो क्या होगा एनर्जी? बताओ. En की वैल्यू क्या होगा? n plus half
h cut omega dash, and that value is equal to n plus half h cut root under 1 plus epsilon, है ना, k upon m. Yes. Yes. And what is root under k upon m? Is equal to omega. Omega naught. So that value is equal to n plus half h cut omega root under 1 plus epsilon. Now आपको एनर्जी किस ऑर्डर के लिए लेकर आनी है? आपको En1 को कैलकुलेट करना है. What you have to do? You have to calculate En1. What will be that value? So what you have to do next? Next क्या करोगे? यहां तो हो गया. So you will just go for what? Taylor expansion, because this epsilon is very small. It is also said that this epsilon is very small. So you have to go for Taylor expansion. And when you will go for Taylor expansion, then you have n by 2 h cut omega. And what is Taylor expansion of 1 plus epsilon to the power root 1 minus 1 by 2 or plus 1 by 2? Plus 1 by 2. So plus epsilon upon 2 minus epsilon square upon 8, something like this, है ना? So आपको epsilon square का भी पूछ सकता है, but we have to just go for up to value. So ये इसके साथ आ जाएगा. So that is n plus half h cut omega, that is original Hamiltonian, plus n by 2 plus 1 by 4 h cut omega epsilon, and next level you can go for something like n by 8 plus 1 by 16 epsilon square with the negative sign. So what will be answer? What is En1? What is your En1? N plus half plus 1 by 4 h cut omega. So this is your En1, the first order of epsilon. Okay. So you can see we have done some beautiful problem based on harmonic oscillator. So next class में हम लोग कुछ beautiful problem spin और basically hydrogen atom इन सबको दिमाग में रखकर करेंगे. So रिवीजन भी हो रहा है, हमारा चैप्टर भी आगे जाता जा रहा है. Okay. So today we have done some perturbation on harmonic oscillator. Next class we will going to finish a first order correction. Sorry, for non-degenerate perturbation. Then we will go for what? Degenerate perturbation. This will take again 3 class. Then your course is almost over. Then we will go for scattering. Okay. Chalo. Thank you.